Hello bachcho, let's read the question. The question says here, interspecific competition between plants may manifest itself by chemical aggregation called as. So जो interspecific competition होता है between the plant, this may manifested itself. So first one is given here, that is the parasitism. Parasitism denoting the process where, that means यहाँ पे क्या होता है, जो कि एक parasite होता है, एक host होता है, होस्ट पैरासाइट के रिलेशंस होता है, पैरासाइट रिलेशनशिप होता है जिसमें वन पैरासाइट, जो कि पैरासाइट है, वो क्या होता है, उसको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिशियल होता है, एंड जो होस्ट होता है वो अफेक्टेड होता है, सो इसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म. सो दिस वन इज रॉन्ग. देन प्रीडेशन डिनोटिंग दिस इज द प्रे एंड प्रीडेटर रिलेशनशिप. सो दिस प्रे एंड प्रीडेशन रिलेशनशिप शोइंग दैट इज दिस इज द कंजप्शन ऑफ वन स्पीसीज. सो इसमें क्या होता है, कंजप्शन होता है, कंजप्शन होता है वन स्पीसीज, दैट इज द प्रे, बाय द अनदर स्पीसीज, दैट इज द प्रीडेटर. सो जो प्रेडेटर होता है वो कंजप्शन करता है प्रे को. this process is known as the predation. So this one is wrong. Then the interspecific competition, then ecological survey, this is not related to the interspecific. So what is last one is given here, allelopathy. So what is allelopathy? So this allelopathy is showing that is it is a biological phenomenon by which an organism produce one or more biochemical. So इसमें क्या होता है, organism produce करते हैं one or more biochemicals जो कि इन्फ्लुएंस होता है द ग्रोथ, इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. इससे इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ में, इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ, सर्वाइवल एंड ऑल्सो रिप्रोडक्शन में भी इन्फ्लुएंस होता है ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जिससे अदर ऑर्गेनिज्म का जो ये सब प्रोसेस होता है इन्फ्लुएंस होता है. सो दिस बायोकेमिकल इज ऑल्सो नोन एज अलियोकेमिकल. सो जो बायोकेमिकल सीक्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, aliochemicals. So these aliochemicals, that may be beneficial or detrimental. This is beneficial or detrimental, that is the negative. This is beneficial is known as positive allelopathy, and this is known as negative allelopathy. And both effects on the target organism and the aliochemicals, these are subject to the secondary metabolites. These are subjected to secondary metabolites. And these are not required for the metabolism, for the growth, for the development, or for the requirement of the allelopathic organism. And these aliochemical with the negative allelopathy, these are effect important both in plant defense against the herbivorous plant. So allelopathy is a characteristics of certain plant algae, bacteria, coral and fungi, and different types of. So this allelopathic interaction, this is an important factor in the determination of the species, distributing in abundance within the plant communities, such as through the important successful, maybe this is invasive plant. So the interspecific competition, this is known as the interspecific competition between the plant may be manifested itself by the chemical aggressives. That chemical is the biochemical, all known as aliochemicals. Option C is our correct answer. I hope you understood it. Best of luck.